Hello everyone, welcome back to Your Thoughts Are Valid and I hope you all are doing great. तो आज के वीडियो में हम तीन पायनियर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि पॉजिटिव साइकोलॉजी के जो मेन पायनियर्स थे तीन, जिसमें से कि पहले हैं प्रोफेसर नॉसरैट पेशेशकिन, देन देयर इज मार्टिन सेलिगमैन and the last one we will read about is Dr. Tayyab Rashid. So let's start with Professor Nossrat Peseschkian. So पॉजिटिव साइकोथेरेपी 1968 में फाइंड की गई थी और किसने की थी? प्रोफेसर नॉसरैट पेशेशकिन ने ही की थी. He is from Iran and he moved to Germany to study medicine. He became an MD, then he did his PhD. He's a neurologist, psychiatrist, psychotherapist, and a doctor of psychosomatic medicine. And he focused on differences between philosophy, traditions, and professional differences in Oriental and Western cultures during his professional training and practical experiences. So, the method of positive psychotherapy is based on a transcultural approach, and his work involved the investigations in 22 different cultural groups. इनका जो पहला बुक था पॉजिटिव साइकोथेरेपी, उसका नाम था, इट वाज पब्लिश्ड इन 1977. Establishment of a global network of 40 centers of positive psychotherapy in 23 countries to date, and International Center for Positive Psychotherapy. He published around 22 books, which are partly translated into 24 different languages, and approximately 260 articles have been published in scientific magazines. He is the president of Federal Republic of Germany. He was सॉरी प्रेसिडेंट ऑफ फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी. उन्होंने 2005 में वो एक डॉक्यूमेंट साइन किया था डॉक्टर नॉसेट पेशेशकिन को डिस्टिंग्विश करने के लिए एज फाउंडर ऑफ पॉजिटिव साइकोथेरेपी विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट. ऑर्डर ऑफ मेरिट क्या है? ये हाईएस्ट रिकॉग्निशन है फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी के लोगों के लिए, या वहाँ पे उन लोगों के लिए. ये उन सिटीजन्स के लिए होता है जिन्होंने एक्वायर की होती है डिस्टिंग्विश सर्विसेज एंड अचीवमेंट सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल या स्पिरिचुअल फील्ड्स में, या फिर उनके खुद के पर्टिकुलर सर्विसेज के एरिया में. फॉर एग्जाम्पल सोशल चैरिटी और ह्यूमैनिटेरियन हेल्प. तो उनको ये ऑर्डर ऑफ मेरिट भी मिला था. इसके लिए उनका नाम रजिस्टर कर दिया गया था. फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने किया था ये. His model is a notable synthesis of psychodynamic and behavioral therapeutic elements, making an essential contribution to unified relationship within psychotherapy. ठीक है, तो ये एक notable synthesis है psychodynamic और behavioral therapeutic elements का, जो कि एक यूनिफाइड रिलेशनशिप में कंट्रीब्यूट करता है साइकोथेरेपी के अंडर ही. ही इंट्रोड्यूस्ड अ फ्रेमवर्क विथ 4 लाइफ एरियाज. और कौन से ये एरियाज हैं? बॉडी, अचीवमेंट, रिलेशनशिप्स और स्पिरिचुअलिटी. और उन्होंने बोला था कि अ ह्यूमन बीइंग शुड एम फॉर बैलेंस इन दीज 4 डोमेन्स, which parallels positive psychology's emphasis on life satisfaction and holistic well-being. Sorry, yeah. Peseschkian incorporated cultural narratives and Eastern philosophies in his therapeutic work. He often used parables, stories, and metaphors from different cultures to facilitate understanding and healing. This aligns with the multicultural sensitivity of modern positive psychology, which emphasizes diverse experiences and values. पॉजिटिव साइकोथेरेपी में पेसेस्किन ने एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था माइक्रो ट्रॉमास का, which is basically like a small emotional or psychological wounds that accumulate over time and affect a person's mental health. Peseschkian believed that inner and outer conflicts can be resolved by focusing on resources individual possess, like emotional, cognitive, and behavioral strength. This solution-oriented approach is aligned with the goal of positive psychology, which was to build flourishing lives through leveraging personal strengths and resilience. ठीक है कि अपनी लाइफ को फ्लरिश करना खुद के स्ट्रेंथ्स और रेजिलियंस को यूज करके.
Peseschkian developed this model to offer a holistic and optimistic view of human nature, integrating both Western psychotherapeutic techniques and Eastern philosophical insights. What is balance model? Balance model is the heart of positive psychotherapy. It divides human life into four essential areas. ठीक है, बैलेंस मॉडल ये पेशेशकिन ने दिया था. तो ये ह्यूमन लाइफ को चार एसेंशियल एरियाज में डिवाइड करता है दैट नीड टू बी बैलेंस्ड फॉर ओवरऑल वेल बीइंग. ठीक है. पहला है बॉडी और हेल्थ, फिजिकल वेलबींग, बेसिकली हमारी जो हेल्थ हैबिट्स है या फिर हम सेल्फ केयर के लिए क्या करते हैं. दूसरा है अचीवमेंट या वर्क, मतलब प्रोफेशनली हम कितने सक्सेसफुल है, हमारा करियर कैसा है, प्रोडक्टिविटी एंड सेंस ऑफ अचीवमेंट. एंड देन देयर इज कॉन्टैक्ट्स और वी कैन से रिलेशनशिप, हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसे हैं, हमारे फ्रेंड्स कितने हैं, कैसे हैं, सोशल कनेक्शन हमारे कैसे हैं. देन लास्ट वन इज फैंटेसी, फ्यूचर और स्पिरिचुअलिटी, which talks about imagination, hopes, dreams, spirituality, and future orientation. Pashashkian believed कि अगर इन चार एरियाज में से किसी में भी अगर इम्बैलेंस है तो हमें साइकोलॉजिकल डिफिकल्टीज आएंगी. Therapy help individuals explore these domains and find balance, fostering greater psychological well-being. और इसका एग्जाम्पल क्या है? A person may excel in their career, but they can neglect their physical health or personal relationship. लोग करियर बनाने के लिए अपनी हेल्थ वगैरह दाव पे लगा देते हैं. इनफैक्ट रिलेशनशिप्स लाइक दे जस्ट कीप वर्किंग, दे डोंट मेक सोशल कनेक्शंस वगैरह. तो फिर एक एरिया में तो दे आर लाइक डूइंग टू गुड और बाकी दो एरियाज में दे आर नॉट. तो पॉजिटिव साइकोथेरेपी वुड हेल्प ऐसे इंडिविजुअल की टू रिकॉग्नाइज कि इम्बैलेंस हो रहा है and to develop strategies to enhance neglected areas, like जैसे कि health के लिए to set some time aside for like for doing exercise या फिर giving some time to family or friends, जिससे कि एक बैलेंस क्रिएट हो सके लाइफ में. Then positive interpretation of conflict. Peseschkian proposed that conflicts and symptoms in life are not just problems to be eliminated, but signals of potential growth. तो पेसेस्किन ने प्रपोज किया कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स या प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में, वो सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट्स या एंजाइटी जो भी हम फेस करते हैं लाइफ में, दे आर नॉट जस्ट प्रॉब्लम्स जिनको हमें सिर्फ एलिमिनेट करने पे फोकस करना चाहिए. समटाइम्स दे आर लाइक दैट शो दैट सिग्नल्स आर पोटेंशियल. He introduced a framework to interpret these conflicts positively by focusing on the capacities and strengths individuals have to overcome them. पॉजिटिव साइकोथेरेपी में हर एक कॉन्फ्लिक्ट या साइकोलॉजिकल सिम्टम को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा जाता है फॉर पर्सनल डेवलपमेंट. फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान है जिसको एंजाइटी हो रही है करियर को लेके, सो नाउ दिस पर्सन कैन रिफ्रेम द एंजाइटी एज अ साइन that they deeply value their professional growth, and then they will have this motivation to overcome those problems and make a good career. So therapist help करता है individual की to tap into their strength of perseverance and planning to address the situation constructively. Then there is the concept of micro trauma, which means everyday emotional stresses that accumulate over time and cause psychological tension. While traditional psychotherapy often focuses on major traumas or life events, positive psychotherapy highlights importance of addressing these seemingly minor experiences as they can have a significant impact on mental health over time. For example, a client report कर सकता है ongoing feelings of inadequacy due to repeated minor criticism from a colleague. Rather than dismissing these instances as insignificant, positive psychotherapy इसको acknowledge करेगा और बोलेगा कि इसके चक्कर में लो सेल्फ एस्टीम हुआ है, जिसके चक्कर में प्रॉब्लम्स आ रही हैं. सो थेरेपी वुड फोकस ऑन डेवलपिंग रेजिलियंस एंड एड्रेसिंग दीज वुंड्स. देन रिसोर्स ओरिएंटेड अप्रोच, इसका मतलब क्या है? आइडेंटिफाई करना, यूज करना इंडिविजुअल के इमोशनल, सोशल और कॉग्निटिव रिसोर्सेज, जिससे कि वो जो भी चैलेंजेस आए लाइफ में उनको ओवरकम कर पाए, और इन एम्फसाइज करके इन स्ट्रेंथ्स को, इन एबिलिटीज को
Positive psychotherapy empowers individuals to become active agents in their healing process. फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान डिप्रेशन से सफर कर रहा है तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ओनली ऑन देयर डिप्रेसिव सिम्टम्स, थेरेपिस्ट एक्सप्लोर करेगा पर्सन की एबिलिटी टू कनेक्ट इमोशनली विद अदर्स, सो दिस वुड बी कॉल्ड रिलेशनशिप रिसोर्सेज, और देयर हिस्ट्री ऑफ मैनेजिंग डिफिकल्ट सिचुएशंस इन द पास्ट which will show resilience. Then it has transcultural perspective. पेशेश्किन बिलीव कि कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिविजुअल के साइकोलॉजिकल लैंडस्केप को शेप करने में. Therefore, he integrated stories, parables, and cultural narratives from different traditions into his therapy, making it adaptable to a wide range of people across cultures. For example, like therapist जो है वो might share a story about patience or compassion from Eastern tradition to help a client understand the importance of those qualities in their healing process. So this technique helps extract concepts relatable and culturally relevant for the client. Okay, so then there is primary and secondary capacities. Uh, Peseschkian identified two sets of human capacities, primary and secondary. Primary involves love and knowledge, and secondary involves patience, reliability, achievement, etc. Primary capacities fundamental होती हैं, and when these are underdeveloped or blocked, secondary capacities जो होती हैं वो अपना precedence ले लेती हैं, which can lead to conflicts or imbalances. For example, एक इंसान जो कि punctuality को बहुत value करता है achievement को, but there is this inability to express love or understanding in relationships. This can cause a strain in their personal life. So positive psychotherapy help करते हैं client को recognize करने के लिए ये imbalance and work toward developing their primary capacities to foster healthier relationship and life satisfaction. Okay. So moving on to next part, which is 5 stages of therapy. So positive psychotherapy is typically structured into 5 stages, which guide therapeutic process. First one is observation, जिसमें therapist explore करता है client की problem को और identify करता है areas of imbalance. Second is inventory, therapist help करता है client को recognize करने में उसकी strength और resources. सिचुएशनल एनकरेजमेंट, क्लाइंट को एनकरेज किया जाता है कि जो भी इंटरनल रिसोर्सेज अवेलेबल है लाइक रेजिलियंस वगैरह वो यूज करें टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स. देन देयर इज वर्बलाइजेशन, क्लाइंट और थेरेपिस्ट ओपन डायलॉग में एंगेज करते हैं रिगार्डिंग द प्रॉब्लम्स द क्लाइंट इज फेसिंग. एंड लास्ट वन इज गोल डेवलपमेंट, थेरेपिस्ट सपोर्ट करता है क्लाइंट को गोल्स क्रिएट करने में जिससे कि लाइफ में एक बैलेंस आता है. तो फॉर एग्जाम्पल एक क्लाइंट बर्नआउट फेस कर रहा है एट वर्क, वो इन स्टेजेस से गो थ्रू कर सकता है, स्टार्टिंग विद ऑब्जर्वेशन ऑफ स्ट्रेस. ठीक है, लाइक दे उसने खुद ने नोटिस किया कि उसको स्ट्रेस ज्यादा हो रहा है, उसके अराउंड लोगों ने किया, उसके थेरेपिस्ट ने नोटिस कर लिया. देन इट इज फॉलोड बाय आइडेंटिफाइंग देयर इमोशनल रेजिलियंस. किसी इन्वेंट्री या फिर कोई क्वेश्चन ऐसे पता लगता है कि इमोशनली हाउ रेजिलियंट दैट पर्सन इज. Then they would be encouraged to use this resilience to tackle their situation, which would come under situational encouragement, and then they can discuss their feelings of being overwhelmed, which would come under verbalization, and finally create a plan to balance work and personal time, which would come under goal development. I hope this is clear. This was very easy to understand, so I'm not explaining it in detail or in Hindi. Then this was the contribution of नौसरात पेशेश्कियन. तो इसमें हमें मेन यही याद रखना है कि इन्होंने पॉजिटिव साइकोथेरेपी फाइंड की थी 1968 में. देन इट इज अबाउट देयर वर्क, एंड हमें जो चीजें याद रखनी है वो बैलेंस मॉडल याद रखना है. ये भी हम आगे की एक वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली डिटेल में पढ़ेंगे. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये पेशेश्कियन का ही कंसेप्ट है. Then positive interpretation of conflict. We studied about this. We studied about micro trauma concept. We understand that this PPT means positive psychotherapy. It is resource oriented approach. Then it also has transcultural perspective. Then we learned about primary and secondary capacities. Then we learned about 5 stages of therapy.
Now let's move on to Seligman. Martin E.P. Seligman. मार्टिन सेलिगमैन को फादर ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी बोला जाता है, is known as one of the leading researchers in the whole field of psychology. He is the director of Penn Positive Psychology Center and director of Penn Master of Applied Positive Psychology Program. He was born on August 12, 1942 in New York. He is an educator, researcher, and author of several books. He served as the director of clinical training program of University of Pennsylvania for 14 years, where his work revolved around topics of learned helplessness, positive psychology, depression, resilience, optimism, and pessimism. तो इनका जो फर्स्ट रिसर्च था, इट वाज अबाउट रीडेफिनेशन ऑफ अ व्यू ऑन डिप्रेशन बाय साइकोलॉजी एंड साइकियाट्री. Then he worked upon theory of learned helplessness. Then he worked upon learned pessimistic attitudes in depression. And finally, he talked about optimism. He is also recognized authority on intervention that prevent depression and build strength and well-being. इन्होंने कम से कम 250 से ऊपर स्कॉलरली आर्टिकल्स लिखे हैं, 20 बुक लिखी हैं, एंड अमंग हिज बेटर नोन वर्क्स आर फ्लरिश. दीज आर द नेम ऑफ द बुक्स ही हैज रिटन. फ्लरिश, ऑथेंटिक हैप्पीनेस, लर्न द ऑप्टिमिज्म, द ऑप्टिमिस्टिक चाइल्ड, हेल्पलेसनेस एंड एब्नॉर्मल साइकोलॉजी. 1998 में डॉक्टर सेलिगमैन को इलेक्ट किया गया एज प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, एपीए. उनका जो प्राइमरी एम था एज एपीए प्रेसिडेंट वाज टू जॉइन प्रैक्टिस एंड साइंस टुगेदर सो both might flourish, a goal that has dominated his own life as a psychologist. Since 2000, his main mission has been the promotion of the field of positive psychology. Dr. Seligman is expanding positive psychology to education, health, and neuroscience and has applied his research to groups like teachers and students, the US Army, athletes, and everyday people. In his seminal 1998 presidential address to APA, Seligman outlined the goals of positive psychology, calling for a shift toward understanding the positive qualities that allow individuals and communities to thrive. So basically, he shifted psychology का जो main goal था, जो कि usually diseases, disorders, distress वगैरह से related था. He shifted that focus towards strengths of human beings, resilience, and all such, and optimism basically. Then Seligman developed PERMA model, which is like the heart of positive psychology. So he developed PERMA model, which identifies five core elements of well-being that contribute to a fulfilling life. For example, a person who feels fulfilled in life may exhibit high levels of positive emotions. They might be really engaged in their work or hobbies. They are able to maintain close relationships, and they also found meaning in their career or personal life, and they celebrate their achievements also. बिफोर हिज वर्क इन पॉजिटिव साइकोलॉजी, सेलिगमैन ने बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन दिया था ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्न हेल्पलेसनेस. This concept emerged from his experiments with dogs in 1960s and 70s, where he found that animals exposed to inescapable stressors eventually became passive and stopped trying to avoid the stress, even when escape was possible. This concept was later applied to human behavior, particularly in the context of depression, when individuals may feel helpless in the face of adversity. For example, एक क्लासरूम में एक स्टूडेंट है जो कि कंसिस्टेंटली फेल हो रहा है, और तो वो एफर्ट्स डाल रहा है, despite their efforts may eventually stop trying altogether. तो कुछ टाइम तक एफर्ट्स डालने के बाद वो थोड़े भी एफर्ट्स डालने छोड़ देगा, ये सोच के कि एफर्ट करके भी जब रिजल्ट नहीं आ रहा, तो लेट्स नॉट पुट एन एफर्ट ओनली. तो बिलीव क्या हो जाएगा, नो अमाउंट ऑफ एफर्ट विल रिजल्ट इन सक्सेस. एंड ये जो कंसेप्ट है, इसको हम लर्न हेल्पलेसनेस बोलते हैं. देन सेलिगमैन की जो रिसर्च थी ऑन ऑप्टिमिज्म और एक्सप्लेनेटरी स्टाइल पे, वो एक अनदर कॉर्नर स्टोन था उनके वर्क का. ऑप्टिमिस्ट जो होता है वो पॉजिटिव इवेंट्स को एट्रीब्यूट करते हैं पर्सनल, परमानेंट एंड परवेसिव कॉजेज में, और जो नेगेटिव इवेंट्स होते हैं उनको वो टेम्पररी और वो उसको टेम्पररी देखते हैं बेसिकली. पेसिमिस्ट जो होते हैं वो नेगेटिव इवेंट्स को परमानेंट देखते हैं एंड पर्सनली ले लेते हैं, जिससे कि वो और जिससे वो हेल्पलेस और डिप्रेस्ड फील करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ऑप्टिमिस्ट को एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आए,
तो दे माइट एट्रीब्यूट इट टू एक्सटर्नल टेम्पररी फैक्टर्स, जैसे कि पढ़ने का ज्यादा टाइम नहीं मिला। और एक पेसिमिस्ट इतने में एट्रीब्यूट कर देगा सेम रिजल्ट टू इंटरनल परमानेंट फैक्टर की मेरे में उतना आईक्यू नहीं है। Seligman also developed positive interventions. Basically, these are practices, or we can say practical exercises designed to boost well-being. These activities focus on cultivating positive emotions, gratitude, and strength among others. For example, like for बहुत well-known positive intervention है three things exercise, जहाँ पे individuals को तीन positive चीजें लिखनी होती हैं जो भी हुई हैं पूरे दिन में and why they occurred. This practice has been shown to increase happiness and reduce depressive symptoms. इनकी जो बुक है ऑथेंटिक हैप्पीनेस, जो कि 2002 में आई थी, सेलिगमैन ने उसमें इंट्रोड्यूस किया था द आइडिया कि जो ट्रू हैप्पीनेस है वो सिर्फ प्लेजर से नहीं आती है बट फ्रॉम लिविंग अ लाइफ ऑफ मीनिंग एंड एंगेजमेंट। एंड ही डिस्क्राइब्ड थ्री पाथ टू गुड लाइफ, जो कि हमने पढ़ा था, प्रेजेंट लाइफ, द एंगेज लाइफ, एंड व्हाट वाज द थर्ड वन, द मीनिंगफुल लाइफ। ओके, तो ये हम फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे है तो प्लीज डू वॉच इट, आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। Then Seligman collaborated with Christopher Peterson to develop values in action classification, a framework of 24 character strengths that are universal across cultures. So about this we will read in detail in coming videos. इसलिए मैं right now I'm not going in detail, मैं बस बता रही हूँ कि this was one of the contribution of Martin Seligman. Then the last one is Dr. Tayyab Rashid. So Dr. Tayyab Rashid is a licensed clinical psychologist and he is a researcher at University of Toronto, Scarborough, Canada. तो जो डॉक्टर राशिद है उनका एक्सपर्टीज इंक्लूड करता है पॉजिटिव क्लिनिकल साइकोलॉजी, स्ट्रेंथ बेस्ड रेजिलियंस, पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ, कल्चरल साइकोथेरेपी एंड पॉजिटिव यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया वैलिडेटेड पॉजिटिव मार्टिन सेलिगमैन और डॉक्टर ऑनर्स वगैरह मिले हैं, being published in peer reviewed journals and has also been featured in Wall Street Journal Psychology Today. सो इन्होंने काम किया है ट्रॉमा विक्टिम्स के साथ, जिसमें कौन इंक्लूडेड थे, सर्वाइवर्स ऑफ एशियन सुनामी 2005 और 9/11 के टेररिस्ट अटैक में जो भी लोग इम्पैक्ट हुए थे, एंड देन फ्लड्स इन पाकिस्तान। ही इज ऑल्सो ट्रेन्ड इन hatha yoga and mindfulness based stress reduction. So, Dr. Rashid advocates an active, realistic, and culturally nuanced search for half full portion of the proverbial glass to survive, thrive, and flourish. ठीक है, तो ये सारी चीजें से ही इज लाइक वेरी रियलिस्टिक एंड लाइक कल्चरली न्यूएंस्ड सर्च कि किन चीजों को लेके कि सरवाइव कैसे करना है, थ्राइव कैसे करना है, फ्लरिश कैसे करना है लाइफ में। डॉक्टर राशिद का मोस्ट नोटेबल कंट्रीब्यूशन है उनका एम्फेसिस स्ट्रेंथ बेस्ड क्लिनिकल साइकोलॉजी में। ही believes that therapy should not only focus on treating symptoms of mental illness but also on helping clients discover and apply their personal strengths to improve well-being and resilience. For example, therapy में Rashid might encourage a client dealing with anxiety to identify their strengths like creativity or perseverance and use these qualities to develop coping strategies rather than only focusing on their anxiety symptoms. Then he has also worked upon developing positive education programs that integrate character strength and well-being into the school curriculum, fostering both academic success and emotional health. For example, in a classroom setting, teachers might encourage students to reflect on their unique strengths, for example, leadership, and apply these qualities to academic and personal challenges, leading to both improved performance and well-being. So this was quite clear. Then Rashid developed the strength-based resilience and well-being model, which emphasizes using personal strength to build resilience in the face of adversity. For example, a student facing academic stress might be guided to identify their strengths, such as problem-solving skills, to create a strategy for managing the stress and develop resilience. Dr. Rashid co-authored The Power of Character Strengths with Dr. Robert McGrath. This book presents practical ways to apply character strengths in everyday life to enhance well-being and navigate challenges.
And this book is rooted in VIA classification of character strengths, which was developed by Martin Seligman and Christopher Peterson, and provides actionable strategies to incorporate these strengths into personal and professional life. So this classification we will study in detail in one of the next videos on positive psychology. So let's leave it for that time. Just remember that Dr. Rashid co-authored The Power of Character Strengths with Dr. Robert McGrath. Then Rashid has also contributed to research on post-traumatic growth, exploring कि individuals कैसे experience करते हैं positive psychological change after going through trauma. He has shown that individuals who focus on their strengths and cultivate positive emotions and find meaning in their experiences are more likely to recover from trauma and grow beyond it. So that was it for today's video. We covered three main pioneers and their works in brief. So if you have any doubt regarding their contributions, please do ask in the comment section. And if you like this video, please do give it a thumbs up and please do subscribe to my channel. Thank you so much.